enjoying, so we can have some interaction in the chat. And as we announced, so I think protein ka we've already, everyone is getting into the groove and understanding why we need to, and by seeing the plates, we are very happy seeing the participation and seeing how gradually the, the protein intake is remarkably improved. And I'm sure you would start seeing a difference with that also in your energy levels and reduction in cravings and all soon. 2-3 days are a little less, but by a week's time, you start seeing a difference. And the next thing that we're going to talk about, which is again something like what I and Salesh were discussing before everybody joined, is often neglected and something which is very, very important, which is our gut health. And to take us through the session today, we have someone who has a lot of knowledge in the subject. She is, and at the same time, not just the knowledge, she's been personally practicing all this and benefiting from the knowledge she's going to share herself, her family, and even her, clients and students whom she's been helping. So we have with us Param. Param is a Hatha Yoga teacher, master by profession, and she's been associated with the health industry with Nutrilite for a very long time, even before she started practicing yoga professionally. And she's personally really seeing her grow in her health journey and, working towards optimum health and very good fitness levels and all. And she's been helping her family and all her students and her clients through that. So yeah, like Salesh is saying, gut is the second brain of our body, and to help us understand more the importance of gut health and what we can do to actually improve our gut health and how it can have a long-term impact on our health. So let's listen to Param. So over to you, Param. Thank you so much, Navneet, for that introduction, and good evening, everyone. And yes, we are very, excited to see the engagement on the group, especially with the protein intake. We are seeing that people are making an effort in how the, in consumption of protein in their plates, I can see has gone up. So the people who have been applying our little tips, we are really happy about that, extremely grateful. And you will definitely give your body 6 months, because this is not a quick fix. The HEAL program is something that we designed to help you form daily habits, because that is how good health works. कोई गोली नहीं है, आपने एक बार खाया और symptoms चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गए. So that is how food and supplementation will heal you and your family for life. So that done, starting with gut health. आजकल तो मतलब I think gut बहुत ज़्यादा, आपने चाहो ना चाहो, you must have heard about it. जी मैं हिंदी में ज़रूर बात करूँगी. I will do a mix of Hindi English, no problem at all. So gut जो है हमने बहुत ज़्यादा सुना होता है आजकल. Gut exactly, what exactly is gut? Gut क्या है? So your gut is basically your gastrointestinal tract. और ये आपके मुंह से शुरू होकर के ends at your anus. So that is how long it is. Your throat, your large intestine, small intestine, your stomach, colon, the whole part, everything is a part of your gut. And gut health, why? अब देखें जैसे आप, you can, if you visualize, it is such a long and big part of your body. And also the most important part, because जो inner lining है उसमें आप ये मान लीजिए about 100 trillion bacteria होते हैं उसमें, जो कि over a period of time आपके मदर के womb के अंदर से बनते आ रहे हैं. एंड जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वो जो फुली डेवलप हो जाते हैं, उसकी हम हेल्थ को मेंटेन रखते हैं with our food and our lifestyle both. Now, I, like Navneet explained, I have been in this, nutrition business with Amway for a long time, and then I started my yoga journey. So nothing is, both the things, being active as well as eating well, go hand in hand. और गट हेल्थ के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी. एंड इसीलिए ये जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है हील, वी आल्सो प्रमोट एक्टिव लिविंग, तो उसके बारे में भी आई विल टच अपॉन. नाउ व्हाट इज योर गट रिस्पांसिबल फॉर? जो भी खाना हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को में काम पे लगाना फॉर ऑल द बॉडीली फंक्शंस इज
what the gut does for us. Bodily functions आप मान लीजिए, everything, you know, first सबसे ज्यादा जरूरी आपके energy levels, you know, आपके energy levels से लेकर आपका mood, you know, then आपकी digestion हो गई, आपकी mental health हो गई, आपके organs की health हो गई, क्योंकि वो गट का ही काम है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से निचोड़ के निकाल के वेस्ट प्रोड्यूस को निकालना और जो अच्छी चीजें हैं उनको अपने अपने काम पर लगाना. All that is done by the gut. So we can, you know, you can imagine how शैलेश ने जो हिंदी वर्ड है वो लिखा है, that is very true. So ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जरूरी हो जाता है गट हेल्थ, you know, आपके लिए. So that is one thing. And आप ये ध्यान रखिए कि 70 to 80% of your body's, you know, immune health comes from your gut. तो आपका गट खराब है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या तो आप, you know, constipated feel करते हैं, या आप bloated feel करते हैं, या you have maybe, you know, diarrhea kind of issues, or you always know the mood is not right when your stomach doesn't feel well. और उसकी बहुत सारे different signals होते हैं बताने के. एंड कई बार लोगों की जो बॉडी होती है हर एक की अलग होती है, एंड a lot of times your body can manage your acidity and all those things for a long time. अपने आप ही मैनेज करती रहती है बॉडी और आपको पता ही नहीं चलता है. It's only when it reaches, you know, an extreme level like the blood, and that is when things like ulcers start forming. एंड उसी के बाद जो है हमें रियलाइज होता है कि अरे बहुत ज्यादा हो गया. बट बॉडी हमेशा आपको थोड़े थोड़े सिग्नल्स देती रहती है, उन सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है. बैड ब्रेथ होना इज ऑल्सो अ सिग्नल दैट योर गट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एंड दैट इज व्हाई देयर इज डायरेक्ट रिलेशन व्हाई बिटवीन your gut health and your brain, that I will explain now. 95% of the body's, you know, serotonin production is located in the gut again. Now what is serotonin? ये एक chemical है which carries all the messages from the cells, you know, to the brain and back. And again, those messages are used for, the better functioning of all the things that are happening in the body, like your mood, like, you know, even your hormonal health, digestion health, wound healing, as well as bone health, and also, you know, reproductive health. ये सारे signals उसका काम है, एंड उसी से होता है. इसीलिए हर बीमारी का हल जो है गट में है. That is what even Ayurveda believes. Now coming to, you know, also there are जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया या आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, ये दोनों चीजें जो हैं आपकी कंट्रोल में है. A lot of other things maybe inside the body are not in your control, but ये दोनों चीजें आपकी कंट्रोल में है, जिसको अगर आप चेंज करें, you can actually change your gut health, you know, especially if you can understand a little bit of supplementation if your gut hasn't been functioning properly, if you understand that, as well as how you can use activity for that. Now, I will just explain a very simple thing. Basically, in Ayurveda, they believe that जो अगर हमारा गट खराब है तो वो बोलते हैं वायु दोष है, you know, and some, if there are any Maharashtrians on the group, you can understand that, you know, vayu is always considered as a problem with the digestive issues, and उसके लिए कहते हैं कि वायूचा दोष असता तर त्याचा एक ही इलाज है उसका, that is पायु का इस्तेमाल करना. That means having a high activity level. So this is, ये एक बहुत पुरानी saying है जो, you know, grandparents use करते कि भाई तुम active नहीं रहते हो इसीलिए तुम constipated रहते हो. So that plays a very important role, because आपके lower body को जितनी, एक walking बहुत ही simple exercise है, उसको जितनी आपको वो activity मिलती है उतनी आपकी digestion and then gut health better होती है. Now that is why as we progress in the program, you will learn how we will talk about activity being a part of this program, especially, you know, something as simple as walking. And then I will just give you 2 simple yoga tips here. One is breathing. अपनी थोड़ा सा सांसों पर ध्यान रहे, क्योंकि वो हर चीज का इलाज है, माना जाता है. दूसरा, even your digestion gets better with that. And a few, you know, asanas that you can sit in. One is, you know, just sitting in Vajrasana. वो folded legs की जो position होती है उसमें आप बैठें, या अगर आप, you know, even on a chair, if you can't sit on the floor, अगर आप कुर्सी पर भी एक टांग को fold करके हाफ सुखासन में भी बैठेंगे तो उससे भी आपकी जो
डाइजेशन है, गट हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती है. Now coming to the food part. Food part plays a very, very important role. Now, few things which are very bad for your gut. सबसे पहला उसमें आ जाता है processed foods. Everything that comes out of a packet, everything जो खाना आप पहचान नहीं सकते हैं, जो सब आपको पता नहीं कि उस पे लिखा हुआ है लेकिन ये उसमें है भी या नहीं, अगर वो कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपके पेट को भी रहेगी, क्योंकि जब हम उसको खाएंगे हमारा पेट पचाने के लिए पहचान नहीं सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैकेज्ड फूड, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर उसकी शेल्फ लाइफ है, अगर मतलब वो 4 दिन से ज्यादा रखी जा सकती है, तो वो नेचुरल तरीके से नहीं होगा, उस पर जरूर कोई केमिकल छिड़का गया है या उसके अंदर डाला गया है जिस वजह से इट कैन स्टे फॉर सो लॉन्ग. तो जस्ट शेयर अ लिटिल पर्सनल एक्सपीरियंस हियर. चीज इज सपोज टू बी हेल्दी फॉर किड्स, हमें लगता है उसमें प्रोटीन है, नवनीत विल टॉक लिटिल अबाउट इट. नेचुरल चीज आल्सो हैज गुड बैक्टीरिया इन इट, तो बट हमें पता नहीं होता, तो आई पहले जब नॉट नाउ, पहले आई वुड बाय द प्रोसेस्ड चीज एंड माई एल्डर डॉटर वुड लाइक टू ईट इट ऑल्सो. एक बार उसके बैग में वो रह गया, बहुत महीनों तक रह गया, वो बैग भी कहीं पड़ा था, एंड आफ्टर 2 months इट वाज नॉट इवन इन द फ्रिज और एनीथिंग, आई रियलाइज कि उसमें कोई फंगस नहीं लगी, उसमें कुछ नहीं लगा, इट वाज जस्ट एज इट इज, थोड़ा सा ढीला हुआ था, दैट्स इट. मतलब आयुर्वेद में एक और चीज कहते हैं, जिस चीज को कोई कीटाणु भी नहीं खाना चाह रहा है, आप उसको क्यों खा रहे हो. So जितना हो सके उतना try to eat fresh food, food which you can recognize. And again for your gut health, I would say, जो खाना आपके region को belong करता है, आप जहाँ के भी हैं, और जो खाना आप खाते हुए बड़े हुए हैं, which your stomach recognizes, that is always good for you, that is always something which will help you in your digestion. अगर हम drastically अपनी diet change कर दें, हमेशा अपने पेट को तकलीफ होती है उसको यूज टू होने के लिए. सो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स बीइंग अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ द गट हेल्थ गेटिंग स्पॉइल्ड, एंड ऑफ कोर्स नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. स्लीप एंड गट का एक अजीब सा रिश्ता है. अगर नींद नहीं आती है तो इंसान का गट खराब है, और गट खराब है तो भी उसको नींद नहीं आएगी. तो ये आपको फिगर आउट करना है, लेकिन ये बहुत जरूरी है. अगर आप यू आर समवन हु वर्क्स इन नाइट शिफ्ट, देन यू मस्ट, आई वुड सजेस्ट, learn things like shavasana, learn to de-stress, do things which bring down your cortisol level so your gut health improves. Of course all the people who are accountability partners on this team are very well versed with all these things. So मेरे talk के बाद आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर अपनी एक call book कीजिए. They will give you tips on how to improve these things. Sleep हो गया, and then I would say बहुत जरूरी है, क्योंकि again your stomach region, the lower part, जो जहाँ पर सारी digestion होनी है, वहाँ पर बहुत सारे muscles involved हैं, and when you move naturally, जो चीजें हैं move होती हैं, and that is how the digestion, assimilation, all that happens very well. Now, two very important things for gut health: one is prebiotic and one is probiotic. The probiotics are foods which have live microorganisms in them, जो कि अगेन आपके पेट के माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल दही, हम सबको पता है, different forms of different food preparations from curd are basically used in most cultures from in all over India and everywhere in the world. तो अगर आपका कुछ दही का प्रिपरेशन है, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, ताक बोलते हैं, अलग रीजन्स में अलग नाम होते हैं, या फिर every region also has a kind of a curry preparation, that all these things included in your food will always help you with your gut. And then prebiotics are foods which again don't have live microorganisms, but they help in the growth and उनको पनपने में, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, उसको पनपने में हेल्प करते हैं आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स को. ये मेजरली फाइबर से आता है, एंड फाइबर सबसे आसान चीज है कि आप सब्जियां खाएं तो उसमें से आपको मिल जाएगा. लेकिन सब्जियों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. समटाइम्स भी
hold on, any kind of pickles that you could make at home or learn from someone. They again have a lot of probiotics natural in them, and especially agar garlic या onion ये सारी चीजें आप include करें अपने खाने में is going to help them to grow properly, the microorganisms in your gut. फिर ये कुछ चीजें हो गई, the probiotics and prebiotics. Fiber में there are two kinds of fibers, your soluble fiber and your insoluble fiber. Soluble fibers normally क्या करते हैं, जैसे कि बहुत commonly used है, I think उसको इसबगोल कहते हैं. Am I right, Shailesh? इसबगोल, right? Yeah. So what that does is it increases the roughage in your food. Even vegetables do that. अगर बहुत सारी vegetables इंसान नहीं खाता है तो normally एक common practice है, काफी बुजुर्गों को आप देखते हैं, they will have इसबगोल every day. So what that does is it just increases the roughage in the body. मतलब कि bulk up कर देगा आपके waste material को शरीर में. लेकिन एक soluble fiber जो कि पानी में बिल्कुल ही घुल जाता है, we have one of those. This is the box. The person who's put you on this program can tell you more about it. What this does, since it's a soluble fiber, ये आपका जो GI इंडेक्स है उसको लो करेगा. इसको हम खाने के साथ ही लेते हैं, लाइक जब मैं लंच करती हूँ तो मैं मिक्स करके रख लेती हूँ, एंड देन आई जस्ट ड्रिंक इट आफ्टर माय लंच. एंड उसके साथ क्या होता है कि एक काफी सारा पानी भी मैं पी लेती हूँ, which is again good. So what this does is, since it is a soluble fiber, it will not give me a glucose spike from my meal. अगर मेरे carbs वगैरह ज्यादा है तो GI इंडेक्स खाने का जो है उसको लो कर देता है. एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, when we are looking at detoxing our bodies, especially with vegetables, जब हम वो सब चीजें खा रहे हैं, so एक soluble fiber क्या करता है, जो भी impurities है बॉडी में, टॉक्सिन्स होते हैं, उनसे बाइंड करके उनको बॉडी से निकालने में मदद करता है. So that is slightly, इसका जो काम है एक soluble fiber का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. That is the difference between your soluble and insoluble fiber. And उसके बाद अब जब आपने फाइबर इनटेक अपना अच्छा कर लिया है, you are focusing on your prebiotics and probiotics. Talking about sleep, again जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि आप de-stress करना सीखें, different things. What happens is when we are not getting enough sleep, our body doesn't get that time to rest. And when it doesn't get the time to rest, the next day we again feel not fresh. When you don't feel fresh, हमेशा आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो थोड़ी सी हायर साइड पे रहती हैं. किसी एक दिन आप लेट सोइएगा, दूसरे दिन आपको भूख ज्यादा जरूर लगती है. So that is how again sleep plays a very important role, which is why we always recommend को जो आपकी जो last meal of the day है उसको आप थोड़ा सा light रखें and try to eat around sunset. Even if you are someone who works late hours and it is very difficult for you to eat early and rest early, आप अपना maybe शाम में कुछ प्रोटीन वगैरह ले लें and then try to have a very light dinner. Now what that does is there are two things. One is जब हम खाना लेट खाते हैं, so दो हॉर्मोन्स इकट्ठे नहीं प्रोड्यूस हो सकते. एक मेलाटोनिन है जो आपकी नींद आने में, अच्छी स्लीप में आपको हेल्प करता है, एंड दूसरा अगर आपका कोर्टिसोल हाई है तो वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को जो है अच्छे से होने नहीं देता. जब हम अपना खाना जल्दी खा लेते हैं and it is a lighter dinner, what happens is the melatonin production happens much better, and whatever time you will sleep, you will sleep better, and that definitely will help you to rest and repair. जो अगर sleep ठीक से नहीं हो रही है तो फिर वो चीजें digestion पर भी असर करती हैं, and they kind of just disrupt your gut health. So that is one reason why we always recommend in a lighter dinner and a little bit of movement after dinner, so that you can relax and sleep better. And movement ke liye at that time, walking is always the best kind of thing. So just इस सब सारी चीजों को recap करते हुए, I would like to tell you a few things. Now, what are the three reasons why we
Shailesh has been, just writing in the chat, and that is very true. So basically, what are the 3 reasons जो मैंने कहा कि आपकी gut जैसे खराब होती है जिन चीजों से? One is processed foods, packaged foods. When we are not aware of what food we are eating, थोड़ा बहुत yes we all eat, but अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है and real foods की कम है, that is when your gut starts getting, unhealthy, and that is when one of the main things is it causes inflammation. जो बाहर से आपको क्या पता चलता है कि मुझे bloating हो रही है and flatulence हो रही है. Flatulence and bloating is a very common problem these days, and that is always the start of your gut getting unhealthy. So आपने उस चीज का ध्यान रखना है. Your water intake should always be very good. Water, and try to add things like chas or laban or whatever you call it, like taak, these things which are made from curd. घर पे बनाए नहीं हो पाता है तो then you can also always buy if you are someone who's working. And taking care of your sleep. These 3 things आपको उस चीज का मतलब ध्यान रखना है. जब ये चीजें ठीक से पूरी नहीं हो रही हैं, वाटर इनटेक नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, you will see that your gut is not good. And 3 functions of the gut which are very very important. One is of course your all your bodily functions, like अगर आप अपने mental health देख लीजिए, आप अपनी hormonal health देख लीजिए, अगर आप muscle build कर रहे हैं तो भी you require your gut to be healthy so that the muscle is getting built properly. For everything in the body, your gut is going to support that function. And now, just to finish, what are the 3 foods which I feel could help you with gut health? One is of course the prebiotics, like I had explained to you, that you add fiber to your food. Vegetables आप जैसे जैसे ज़्यादा खाएंगे, you will see that your digestion gets better. But ज़्यादा भी कितनी ज़्यादा, which is why we encourage you to post your pictures in your lunch, now for the coming days, so that we can comment and we can guide you कि क्या कितना खाना है आपने. And of course, your accountability partner is there to give you a detailed consultation on this as well. So fiber is one main thing. Which foods to recommend? Is it recommended to have a probiotic in dinner? Depends. अगर आप मतलब like what kind of probiotic, if you could just write. Are you talking about chas? Yeah, it's chas or curd or anything else. It depends upon the time of the year. If it is summers, you can definitely have it. Also, if you are having a late dinner, it might not suit you. And second is, it always depends on the person. Like I can have it, but then because this is a very Ayurvedic question, शायद आपने आयुर्वेद के हिसाब से पूछा है, तो वो लोगों का शरीर जो है वो अलग होता है और किसी किसी को नहीं सूट करता है, किसी किसी को सूट करता है. So उस चीज का No, आपने ma'am. ध्यान Yeah. Actually, it's general saying that कि दही रात में नहीं खाना चाहिए. So I just wanted to clarify कि क्या होता है. There's nothing with Ayurvedic. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज आपको वेदर के हिसाब से देखिए, एक चीज मैं इस चीज का जवाब मैं ना इस तरीके से दूंगी. अगर आपकी अवेयरनेस हाई है ना, एज इन आपका बाय दैट आई मीन योर कनेक्शन विद योर बॉडी. जैसे मौसम गर्म है और आपको हीट फील हो रही है और इट इज नॉट विंटर्स, देन ऑफ कोर्स यू शुड हैव, बोला जाता है कि आप डिनर में भी लें, जैसे छाछ, लस्सी या दही हो गया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है, you can feel it also. Yes, I got it. Thank you so much. I guess you're muted by mistake. Please unmute. Sorry. Oh, I'm sorry. I was talking on mute. Okay. Anyway, so we were talking about the 3 foods, yeah, probiotics, and sorry, I just lost track because I was answering that question. And yes, I was telling them the 3 things to take care of was to add, and of course add good fats. Again, they are very good for your gut lining.
And we talked about fiber, we talked about prebiotics and probiotics. I would just like to end with, we all know about Trifla. Trifla तो हमने बचपन से सुना हुआ है. One particular product which has been my absolute favorite is this. This is again Trifla. Powders भी मिलते हैं. I don't know about them, but this I can tell you about. It is basically a combination of 3 fruits, आमलाखी, हरिटकी एंड विभिटाकी. तो ये क्या करते हैं ये 3 फ्रूट्स? एक फ्रूट जो है वो आपके इंटरनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. एक फ्रूट जो है वो मूवमेंट करेगा ऑफ रफेज इन द बॉडी. एंड तीसरा जो है वो बाइंड करेगा विद द टॉक्सिन्स. सो तीनों फ्रूट्स, इसीलिए त्रिफला बोलते हैं उसको आयुर्वेद में. तीनों फ्रूट्स मिल करके दे विल हेल्प एंड गिव यू बेटर डाइजेस्टिव health. So this really helps in your gut health. And other than that, I always say movement is very, very important. Move, because our bodies were made to move. Try to eat as natural as possible so that your body recognizes that food and then the gut remains healthy. So any questions that you want to ask, we have 2 minutes. I can answer, or Navneet can also answer. आई थिंक दिस दही वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है कि रात को दही ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. सो इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग. आप लेकर देखिए, एंड इफ यू फील दैट डजंट फील गुड देन डोंट टेक इट नेक्स्ट टाइम. Hi Param, this is Alpana. Hi Alpana. I have a couple of queries. What are the other types of pro and prebiotic natural apart from dahi and yogurt and all? What are the other things that are good to consume? Like Ghee is also good to consume. And in fact, even pickled vegetables, if you could, if there is like, I can see where that question comes from. Like my daughter also would not have dahi, and some people don't want to have gala kharab hota and all those things. So you can definitely make sure that you have a diverse amount of vegetables, but in a controlled quantity. Don't go overboard with the vegetables also. Make sure that you add ghee to it, and you can add pickled vegetables. Make some pickles at home, because that also has that live microorganisms in them. And instead of dahi, you could maybe make a curry preparation from the dahi. Yeah, I hope that answers the question. How about raw salad? Raw salad is good. Who is asking? Yes, even white butter and natural cheese. Yes. सफेद मक्खन, raw salad भी आप मतलब why not? Anything else? Anyways, each one of you has an accountability partner. What I would suggest is, देखिए ये जो gut को समझने की जो रिश्ता है मैं कहूंगी, and जो कहानी है, that takes time. And the whole reason why we are doing this heal program is because we want people to understand their food. We want them to understand their own bodies and their own plates. And that is why अगर आप जितना participate करेंगे with posting pictures on the group, that much more you will learn about your food. मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए. आधे घंटे में समझना अपनी गट को बहुत मुश्किल हो जाता है. ये चीज है जो आप जितना पोस्ट करेंगे, जितना हमसे पर्सनली बात करेंगे, उतना ही आपको उससे मिलता रहेगा. So the activity from tomorrow is the lunch plate, and I am very excited about it, because getting the lunch plate proportion right is very good. And yes, of course, soaked chia seeds also help a lot. For people who don't want to eat too many vegetables, नहीं हो पाता है, फाइबर की हमें प्रॉब्लम हो रही है, so आपको हम बताते रहेंगे, soaked chia seeds भी आप यूज कर सकते हैं. So I think we will end here.